Hello my dear student, welcome you here in this lecture number 67 of the topic body fluids and circulation. Now we have started the study of human heart and earlier details I would like to give you from a NEET point of view there. Okay, we have studied about the morphology of heart in very much detail with several points there. So prepare all that. In the last video I have given that. Now we have to learn regarding the coverings of the heart. Human heart is covered and very well protected there. But the names of that and details of that I would like to give you. It is covered by a layer called as, or the covering called as pericardium, and this pericardium is double walled. This is double walled covering there. प्रोटेक्टिव कवरिंग तो है ही है, पर वो डबल वॉल्ड है. देखो कितना नेचर ने हमारे हार्ट को जतन करके रखा है. एक तो पहले क्या है, बाहर से थोरेसिक केज है, वो कठिन है. थोरेसिक केज जो है वो कठिन है. दैट इज पर्टिकुलरली फॉर्म बाय बोन्स एक्चुअली. और उसमें ये जो बीच वाला पार्ट है एग्जैक्टली सेंटर का, दैट इज कॉल्ड द स्टर्नम. That is a dagger shaped bone actually, and that is very hard and tough. अब देखो यहाँ पे ऐसे मार के कुछ भी नहीं होता. आज ज़्यादा जोर से मत मारो, बट यहाँ पे देखो आप पर्टिकुलरली, that means for little damages or injuries there, no problem will be there. वो पूरा का पूरा बोन से बना हुआ है, एक स्टर्नम है. उसके नीचे जो स्पेस है वो मेडिस्टिनम कहते हैं उसे, and in that the heart is placed. Okay. Now this is outer covering. Now heart is internally covered by, उसके thoracic cage के अंदर जो heart है that is covered by pericardium which is double walled. The outer wall is fibrous pericardium and the inner is there serous pericardium. Fibrous pericardium and serous pericardium. ध्यान में रखो. The fibrous pericardium is outermost covering that is inelastic. वो tough है, inelastic है, and that is formed by tough fibers, and that is particularly giving protection. Totally tough fiber से बना हुआ है, and that is very much protective. Okay, inelastic है. That is what you say, that fibrous pericardium. Whereas serous pericardium is inner, that is very much smooth, moist, and that is somewhat slimy we can say. So it is inner smooth moist layer. What is that? Serous pericardium. And fibrous is outer, which is very protective, hard and tough, formed by the tough fibers. तो ये कवरिंग हो गई दो, और उसके बाहर तो thoracic cage है. That's why heart will be very well protected. Okay. Then that serous pericardium is having two layers again. उसके दो layers है. One is called the parietal layer or parietal pericardium. Other is called the visceral layer or visceral pericardium. Isn't it? This serous has got two layers. Outer is parietal layer, inner is visceral layer. Now parietal layer is, or parietal pericardium is forming inner lining of fibrous pericardium. अब देखो मैं निकालूंगा ये बाहर वाला जो कवरिंग है डायग्रामेटिक, ये है फाइब्रस, ये टफ है, ये फाइब्रस हो गया. तो उसके अंदर वाला जो है वो क्या है, थोड़ा थिन है, वो क्या है, सेरस पेरिकार्डियम. दिस इज सेरस पेरिकार्डियम. But now I am saying that this serous pericardium is also of two layers. Okay. So one is parietal, one is visceral. आप बता सकते हैं ये क्या है? This is the fibrous pericardium. Then ये क्या है? This is the parietal pericardium. और ये क्या है? This is the visceral. This is the visceral pericardium. Okay, very clear.
Parietal pericardium is forming the innermost lining layer of that fibrous pericardium. ये फाइब्रस पेरिकार्डियम की इनरमोस्ट लाइनिंग लेयर टफ है, ये उसकी इनरमोस्ट लाइनिंग लेयर कौन बनेगा? दैट इज पर्टिकुलरली द parietal layer. Okay, and then the visceral layer. Now visceral layer is there, also called as epicardium, and it adheres to the heart and outer covering of heart. एक्चुअली अब ये हार्ट का ही कवरिंग है, अब ये जो है वो हार्ट का ही आउटर मोस्ट कवरिंग है. ओके, लाइक दिस इज द हार्ट सपोज, हम तो निकालेंगे बाद में. सो आउटर मोस्ट कवरिंग लेयर ऑफ द हार्ट इज एपिकार्डियम, और दैट इज दैट विसरल पेरिकार्डियम. उसे विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं. समझ में आ रहा है? बहुत ही सिंपल. Then in between the parietal layer and visceral layer there is a space known as pericardial space. What is that? Space between parietal layer and visceral layer. Parietal pericardium and visceral pericardium are separated by a space known as, that is, pericardial space. Perica means outer. Okay, periphery. यानी पेरिकार्डियल, कार्डियक के आउटर जो स्पेस है, दैट इज पेरिकार्डियल स्पेस. ओके, नाउ दिस पेरिकार्डियल स्पेस इज filled with one fluid, watery fluid known as pericardial fluid, or that is called the PCF. उसे पेरिकार्डियल फ्लूइड या PCF हम शॉर्ट में कहते हैं, and that is there near about 50 ml. ये दो जो लेयर्स है उसमें जो गैप आ गया है वो गैप कितना है? 50 ml स्पेस उसमें है, और उसमें वो जो फ्लूइड है दैट इज PCF. दिस इज PCF, यानी पेरिकार्डियल फ्लूइड, दैट इज अबाउट 50 ml. नाउ वॉल ऑफ द हार्ट, अगेन 3 layers you will notice. The outermost I told you visceral pericardium or epicardium. Then myocardium is the middle. ये wall of heart में myocardial layer जो middle रहेगा, this is myocardium. Okay. And then the endothelium. ये पूरा तो नहीं निकाला मैं, यहाँ तक निकालता. Okay. This is myocardium. और उसके अंदर जो है that is formed by the thin, flat epithelial layers, and they are called as the endothelium layer, that is called as endocardium. यानी वॉल इटसेल्फ हार्ट के भी 3 है. एक्चुअल हार्ट अगर ये है तो हार्ट का आउटर मोस्ट जो ये जो वॉल आ रहा है, स्किन, दैट इज कॉल्ड एज द epicardium, or दैट इज कॉल्ड एज द epi means outer, दैट इज कॉल्ड एज द दैट विसरल पेरिकार्डियम. उसके अंदर जो थिक मसल लेयर आ रहा है, मिडल मसल लेयर जो आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज द मायोकार्डियम. मायो स्टैंड्स फॉर मसल्स. मिडल लेयर मायोकार्डियम, मेड अप ऑफ थिक स्मूथ मसल्स, और उनकी खासियत ऐसी है, दे नेवर अंडरगो टिटेनस. उसको क्रैम्प नहीं आते, रिमेंबर, नहीं तो फिर राम नाम सत्य हो जाता था. So that never undergo fatigue there. ये immune to fatigue muscles है. फटीग उसको आता ही नहीं है, इसलिए हम तो जिंदा रहते हैं. नहीं तो बिल्कुल ये अगर उसको क्रैम्प आ जाता है, कभी कभी क्रैम्प आता है तो देखते हैं डिहाइड्रेशन के बाद हो जाता है, तो क्या हो जाता है? पर्टिकुलरली द मसल्स वुड स्टॉप वर्किंग. लेग्स में होता है. अभी हमारे जो प्लेयर्स खेलते हैं ना क्रिकेट मैच वगैरह, वनडे, T20, सचिन जी को तो बहुत आता था, सचिन तेंदुलकर साहब. तो बहुत बार वहां पे खेलने के बाद क्या होता है, स्वेटिंग से, एक्सर्शन से डिहाइड्रेशन हो जाता, एंड आफ्टर डिहाइड्रेशन द मसल्स स्टार्ट श्रिंकिंग. एक बार श्रिंक होते तो वो फिर रिलैक्स ही नहीं होते, एंड देन दौड़ते दौड़ते उनको तकलीफ हो जाती थी, उसे कहते क्रैम्प्स, टिटेनस. तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है, मायोजेनिक है ये. दैट इज मायोजेनिक वॉल देयर, मायोकार्डियम, एंड इनरमोस्ट इज देयर
endocardium. Endocardium is flat epithelial cell, thin lining. So endocardium, myocardium, epicardium, ये 3 वॉल हार्ट के हो गए. उसके बाद पेरिकार्डियल फ्लूइड है. पेरिकार्डियल फ्लूइड इज just keeping that conditions moist. Pericardial fluid absorbs the shock also. Pericardial fluid prevents the desiccation of the heart. All are very essential there. And because of that coverings of the heart, the human heart is very well protected. So I am confident that you are getting all these points very properly. ये आपको CBSE की बुक में तो नहीं दिखेंगे, पर कभी कभी MCQ में आ सकते हैं. तो डेफिनेटली उसको फॉलो करो. एंड नाउ एक्चुअल ह्यूमन स्ट्रक्चर, ह्यूमन हार्ट स्ट्रक्चर वी हैव टू स्टार्ट इन आवर नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन, टेक केयर and do subscribe to my Cartesian Biology and Cartesian Biology Shorts channel. Thanks a lot.